This class is around organic chemistry, and we are going to do polymerization, right? So let me explain first of all what is polymerization. Polymerization is a process where polymers are being formed. Okay, polymerization. We are going to talk about the polymerization right now. So polymerization is a process where the polymers are being formed, right? Polymers are being formed from the monomers. From the monomers. This process is known as polymerization, right? Okay. Now let's decode the word polymer. The polymer itself means a compound or a molecule which have many small segments combined together, many small molecules combined together, right? So that we call basically polymers, right? Or we can also call it a giant covalent molecule. We can also call it a giant covalent molecule. That's another name for polymer, right? Now this giant macromolecule we have already touched when we were doing the bonding chapter. In which all giant covalent molecules we have done? We have done the giant covalent molecules. They were basically your diamond. Okay, diamond. We have done graphite. We have done silicon dioxide or sand, कह लीजिए आप इसको. We have done silicon. So they all are giant covalent molecules. Now, with reference to the organic chemistry, similar giant covalent molecules will be doing, and we will be calling them the polymers. Basically, that's another name for giant covalent molecule. Now, polymers are formed due to the process of polymerization. Okay, that's the process. So what is the process? Process of forming a giant covalent molecules or a polymer starting from the monomers. Now we come to the point that what are monomers? Monomers are basically a simple covalent. They are basically a simple covalent molecules. So when lot of single covalent molecules they connect together, they will be giving you a polymer, or we'll call it a giant covalent molecule. And this whole process is known as polymerization. So I hope the polymerization concept is clear to you, that what is polymerization? When monomer, or when your simple molecules, okay, n number of monomers, these n number can be 10, 100, 1000, when they connect together, right? And they connect together in the form of a chain. This compound, this giant covalent molecule is known as basically polymer. ठीक है, तो अब हमारे पास polymerization की दो types होती हैं. We have two type of polymerization. We have two type of polymerization. I'm just going to explain you now. Wait a minute. There are two type of polymerization. We have category, we have the type 1 polymerization, which we call addition polymerization. We call it addition polymerization, right? And the second type is known as, this is addition polymerization. And the second type of polymerization, we call it condensation polymerization. We call it condensation polymerization. Okay. Now, what is the basic difference between the two? Both of them are polymerization. Both of them are forming the giant covalent molecules from the monomer. Then why are they of two types, right? Now, let me explain you. This is very, very important for us to understand the difference between the two, because normally the question comes there, we have to evaluate whether it's addition polymerization or it's a condensation polymerization. Now, let me talk first about the condensation polymerization. Now, condensation polymerization is a polymerization where a polymer is being formed. Polymer is being formed due to elimination of simple molecule, for example, simple molecule like water or ammonia. Simple molecule like we have
elimination of simple molecule, or those molecules can be water molecules, they can be ammonia molecules, or it can be your HCl molecule. Now, only water elimination we can see in the examples we have in the syllabus. Ammonia and HCl elimination you can see when you'll be doing A levels chemistry, right? Not now. AS में you'll be doing where the compounds in A2 in fact जहाँ ammonia और HCl eliminate करके और वो polymers बनाते हैं, ठीक है? तो condensation polymerization वो होती है जिस तरह से अब let me give you an example. Now in organic chemistry we have done the formation of an ester. याद आया? एस्टर फॉर्म होता है. एस्टर कैसे फॉर्म होता है? आपके पास अल्कोहल होता है और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. यू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यू हैव एन अल्कोहल. तो होता क्या है? अल्कोहल वी कैन राइट डाउन एज ROH एंड कार्बोक्सिलिक एसिड I can have I can write it down RCOH. ठीक है? Now how ester is being formed? होता क्या है? The H part of an alcohol and the OH part of an acid, right? ये दोनों जो हैं ये eliminate हो जाते हैं. The H part of an alcohol and OH part of an acid is being eliminated, is being removed, and when it gets removed, it gets removed in the form of water. Now the remaining compound, let's call it, let's say this is basically your R1. Let's label it as R1 and let's label it as R double dash. This is R dash and this is R double dash. Now when this compound, when they both are going to the remaining part of an alcohol and carboxylic acid is going to be combined, we will be getting the compound as ROOCR, R dash, ROOCR dash. We can also write it down this as R double dash COOR single dash, and this is a general formula for an ester. तो एस्टर जब भी बनता है तो एक सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और उसके बाद बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है, the alkyl group and O and alkyl group and CO, that combines to give you an ester. This is an ester. Similarly, when we talk about the condensation polymerization, you have इसी तरह से आपके दो मोनोमर्स होते हैं, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स होते हैं, ठीक है. इन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन डिफरेंट, ठीक है, सब टू डिफरेंट or they can be more than two different type of monomers, they connect together, they combine together, or they connect together, right, due to the elimination of a simple molecule like water. जैसे कि हमने बहुत ही simplified example में देखा कि ester formation कैसे हो रही है, जो water और alcohol का carboxylic acid और alcohol में से water eliminate हो रहा है तो आपका ester बन रहा है और साथ में water. तो यही चीज condensation polymerization में भी देखेंगे कि आपस में जो parts हैं, इसका RO पार्ट, ठीक है, इसका RO पार्ट, ये RO पार्ट आ गया इसका, ठीक है, और एसिड का वी हैव RCO पार्ट, तो इसका RCO पार्ट आ गया, ठीक है. ये आपस में जब जुड़ गए, कैसे जुड़ गए? बिकॉज दे हैव गिवन अवे द वाटर मॉलिक्यूल, सो दे आर कनेक्टेड टुगेदर. सो दिस इज बेसिकली एन एस्टर. Similarly, in condensation polymerization, the monomers will be connecting together due to the elimination of a simple molecule, that's water. That is what that is a basic understanding of condensation polymerization. Now let's move on to the addition polymers. So addition polymers क्या होते हैं? Addition polymers are again when a monomer combines together, when the n number of monomers combine together, they will be forming the polymer, ठीक है, they will be forming your polymer. अब इसके अंदर मोनोमर के अंदर मस्ट कंडीशन होती है कि आपका मोनोमर जो हो वो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो. तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं, वी कॉल देम अनसैचुरेटेड. We call them unsaturated. That means they have a capacity, they are known as unsaturated organic molecules. अब what happens here कि double bond जो है, it has a provision, it can easily break down into a single bond. Now let's take an example, very simple example of an ethene. Let's take an example of ethene. Now for example, in case of ethene, my structural formula is basically it's C2H4. So I can have it like C double bond C and it has 4 hydrogen like this. इसके पास 4 हाइड्रोजन इस तरह से, ठीक है.
ये एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह से आई हैव अनदर मॉलिक्यूल आल्सो, आई हैव कार्बन, लेट्स हैव अ मल्टीपल, ठीक है, हम n नंबर ऑफ इथीन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास मोनोमर है। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल आई एम ड्राइंग इन रेड, सो द सेकंड इथीन विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। Similarly, I will be having the third ethene, so let me draw it in purple, so it's carbon carbon double, and we have hydrogen connected to this, so because it's a formula is C2H4. अब ये आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, ये तो अभी सिंगल सिंगल ये मोनोमर है, दिस इज वन मोनोमर, this is second monomer, this is third monomer. Now how are they going to connect together? Connection इनका सिर्फ तब possible है क्योंकि अभी तो ये क्या है, right now they are basically bonded with the double bond और कार्बन की वैलेंसी satisfied है, इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड है, तो ये मजीद आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। अब इनको कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, they will be subjected to high temperature and pressure on under special conditions, under special conditions. And what are those conditions? The special conditions are your high temperature and pressure. So under the high temperature and pressure, what happens, the double bond of these monomers they break down. यहाँ पर जो double bond है इन monomers का वो break down हो जाता है, ठीक है, that breakdowns। और जब double bond इनका break होगा तो दे विल बी गेटिंग दिस, अब यहाँ पे इनका डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, तो अभी सिंगल बॉन्ड रह गया इनके बीच में। तो क्या सिंगल बॉन्ड रहने पर क्या इनकी वैलेंसी अभी भी सेटिस्फाइड है, क्या कार्बन इज बॉन्डेड विद 3, this carbon is again bonded with 3, this carbon is again bonded, so all the carbons are bonded with 3, whereas the carbon has a valency of 4, carbon need to be bonded with 4, ठीक है, ताकि उसके बैलेंस शेल, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। तो अब होगा क्या, ये एक मोनोमर था, दिस वाज मोनोमर 1 विद अ डबल बॉन्ड, दिस वाज मोनोमर 2 विद अ डबल बॉन्ड, दिस वाज मोनोमर 3 विद अ डबल बॉन्ड। अब बिकॉज दे नीड टू कनेक्ट टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म द पॉलीमर, और कार्बन भी अनसैटिस्फाइड है, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। जब ये आपस में कनेक्ट इस तरह से हो जाएंगे और चेन फॉर्म में आ जाएंगे या पॉलीमर बना लेंगे या जाइंट मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो ये आपका पहले हमने बनाया था मोनोमर, ठीक है, और अब इसने क्या किया, डबल बॉन्ड हटा के सिंगल बॉन्ड बना लिया, आपस में कनेक्ट हो गए, एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज अ जाइंट मॉलिक्यूल, इज अ जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, एंड वी कॉल इट अ पॉलीमर। Is it clear? So this is how the monomers they get connected to into polymer. तो क्या क्या किया हमने, स्पेशल कंडीशंस अप्लाई करी, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर किया, और साथ में हमने यहाँ पर अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल लिया, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल या अनसैचुरेटेड मोनोमर लिया, ठीक है। तो अंडर special condition, when these monomers are subjected to special conditions like high temperature, pressure, and in the presence of the catalyst, so what happens, their double bonds breaks up, उनका double bond जो है कार्बन कार्बन double bond है वो टूट जाता है, and hence the monomer they start connecting together to form a polymer. So here this is what the addition polymerization is. Now let's make a comparison between the two. अब हम दोनों के अंदर comparison करते हैं, ठीक है, दोनों के अंदर addition polymerization अगर polymer देखकर और condensation polymerization के अंदर क्या basic difference है, ठीक है। तो अभी हम brainstorming करते हैं। अब अगर आपके पास let's say if you have 10 ethene C2H4, ठीक है, और ये under special under high temperature and pressure when they are subjected to, so these ethene molecule, where ethene is carbon carbon double bond bonded with 4 hydrogen, when 10 molecules, such molecules are subjected to high temperature and pressure, what happens here, the double bond changes into a single bond, ठीक है, आपका डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, उस तरह के आपके एडिशनल यूनिट्स 10 यूनिट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ चेन। तो यहाँ से मेरे पास क्या था, व्हाट आई हैड एन ईथेन, दिस वाज ईथेन, this was known as ethene and I had 10 ethene here, तो ये आपका पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगा और इस पॉलीमर को हम नाम देंगे पॉलीइथीन। सो मोनोमर का जो नेम होता है, मोनोमर का जो नेम होता है उसी के अंदर हम पॉली वर्ड ऐड कर देते हैं, तो हमारा पॉलीमर का नाम आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कंपैरिजन हम कर रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर, ठीक है।
So let's do the comparison between the two, right? So I'm moving on to the next page and will be comparing between the two. So when we compare between the addition polymers, okay, and the addition polymers या polymerization और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कैसे इसके पॉलीमर्स, ये दोनों अलग अलग पॉलीमर्स कैसे बनते हैं. नंबर वन, the addition polymers are formed by the same kind of monomers, and the monomers need to be unsaturated. Because they need to be unsaturated, that's a must condition, must criteria, because then the double bond will break and the different monomers, they will get connected. So you require the same monomers and you require unsaturated. And here the conditions are going to be high temperature, they are going to be high temperature and pressure. ठीक है. अच्छा, कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में point 1, as we have seen, the ester being formed where an alcohol and acid, so these monomers, they need to be different. ठीक है, they need to be different. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एस्टर का बताया, तो दो अलग अलग मोनोमर्स होंगे ए एंड बी, और इन ए एंड बी का एक कुछ पार्ट जो है, कुछ पार्ट जो है ए एंड बी का, वो एलिमिनेट हो जाएगा, दैट विल बी एलिमिनेटेड एंड यू विल गेट अ पॉलीमर एज ए एंड बी. ठीक है, दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग अ पॉलीमर. और साथ में आपको वो पार्ट मिल जाएगा, वो एलिमिनेटेड मॉलिक्यूल मिल जाएगा. दैट एलिमिनेटेड मॉलिक्यूल कैन बी अ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया और HCl. ठीक है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस. अब हम आप दूसरे डिफरेंस पे आते हैं. ये दूसरा डिफरेंस एग्जामिनर हमसे एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछता है. अब देखिए हमने क्या किया था, what we had 10. I'm again and again taking the same concept, same example, so that the things became simpler and easier. We had 10 molecules of ethene. हमारे पास मोनोमर क्या है, हमारे पास इथेन है. It has undergone the process of polymerization and it is forming again C2H4, where the C2H4 का double bond has been changed into the single bond, and there were 10 such unit. ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ये आपके 10 सच यूनिट जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए. ठीक है, ये कनेक्ट हो गए. तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी total MR of monomers was same as the MR of a polymer. ठीक है, क्यों? ये दोनों इसका MR अगर आप निकालें और इसका अगर MR निकालें, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अगर इसका निकालें और इसका निकालें, ये दोनों सेम रहेंगे. क्यों सेम रहेंगे? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहे. क्या सिर्फ चेंज हुआ है? यहाँ पर सिर्फ चेंज हुआ है डबल बॉन्ड इनटू अ सिंगल बॉन्ड. डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में ब्रेक डाउन हो गया. तो MR, ये MCQs में आता है कि टोटल MR जो है इन 10 मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स का ये सेम रहेगा एज अ पॉलीमर्स MR. Why? Because the number of elements, everything remained the same. What was the only change here in order to connect the monomer into a polymer? That was that the double bond was broken down into a single bond, right? So this is a mandatory feature that the unsaturated monomers we have to take, then only the double bond can be broken down into a single bond. Coming to the second point, what was happening here? यहाँ पर हमारे पास elimination हो रहा है. अगर हम कहें कि जब दो मोनोमर्स आपस में कनेक्ट करते हैं, लेट्स से वी हैव टू मोनोमर्स, दिस इज मोनोमर 1 एंड दिस इज अनदर मोनोमर ऑफ अ डिफरेंट काइंड. जब ये आपस में कब तब कनेक्ट करेंगे? जब इनमें से एक छोटा सा मॉलिक्यूल लेट्स से वाटर का निकल रहा है. तो whenever the two monomers are connecting together, water निकल रहा है, that means there is a decrease. Every time whenever the monomer is connecting, there's a decrease in 18 in the MR. हर बार वाटर निकल रहा है तो वाटर का MR जो है वो 18 है. इसलिए जब भी दो मोनोमर आपस में कनेक्ट होंगे, A एंड B जब कनेक्ट होगा तो आपका वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा. ठीक है, जब B एंड A कनेक्ट होगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा. फर्दर आपका ये जो फर्दर आगे कनेक्ट होगा तो फिर यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल. तो कनेक्शन सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपके पास जो है वो कोई सिंपल मॉलिक्यूल निकले. तो क्या यहाँ पर भी यही स्टेटमेंट है कि टोटल
the total relative molecular mass of the monomers, जितने भी आप monomers यूज कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास monomers हैं, इनका total MR is not same as the MR of polymer. You understood why? Because हर बार जब भी दो मोनोमर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, वहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो हर बार देयर इज अ डिक्रीज इन 18 in the MR. Is this much clear? So this is the basic understanding. एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एडिशन पॉलीमर्स जो होते हैं, जो भी एडिशन, ठीक है, ये I'm just giving you the point, but I'll explain it to you later. एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमर्स जो होते हैं, I mean polymers, एडिशन पॉलीमर्स जो होते हैं, they are non biodegradable, so they are threat to the environment. ठीक है, तो जब ये एडिशन पॉलीमर्स को हम जनरली, ठीक है, हम जनरली इनको प्लास्टिक्स भी कहते हैं. सो वी हैव ऑल द काइंड ऑफ प्लास्टिक कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ एडिशन पॉलीमर्स. लाइक फॉर एग्जांपल इथीन से जो है, इथीन मोनोमर से हमारा बन रहा है पॉलीथीन, ठीक है, तो दिस इज अ प्लास्टिक पॉलीथीन, राइट. सिमिलरली प्रोपीन से will be getting a polymer which will be known as polythene. तो ये सारे के सारे हम इनको जनरली प्लास्टिक्स कहते हैं. एंड द प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे आर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट. तो अब एग्जामिनर हमसे वन लाइनर या 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, what is going to be the impact of these addition polymers on the environment. So the impact is, or the effect is that they will be leading to land pollution. ये लैंड पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है, तो ये लैंड पोल्यूशन क्या होती है, तो दे विल बी कॉजिंग द लैंडफिल साइट्स, ठीक है, ये सिर्फ डंप होते जाते हैं लैंडफिल साइट्स, तो इनकी सिर्फ डंपिंग होती है, ये डिग्रेड तो हो नहीं रहे, ये डिसइंटीग्रेट तो हो नहीं रहे, ये ब्रेक डाउन तो हो नहीं रहे, तो ये दे लीड्स टू लैंड पोल्यूशन, राइट. तो ये लैंडफिल साइट, दे लीड्स टू लैंडफिल साइट, दैट्स वन प्रॉब्लम, ठीक है, वन इम्पैक्ट. नंबर 2, अगर हम इनको बर्न करते हैं, if you burn these addition polymers which are basically generally known as plastics, ठीक है, they will be liberating toxic gases. ये toxic gases जो है liberate करते हैं, ये toxic gases liberate करेंगे, तो that is again going to cause the air pollution. तो ये टॉक्सिक गैसेस क्या होती हैं, ज्यादातर HCl होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, which are toxic, which if we inhale they are going to create lot of health hazards, right. तो ये 3 पॉइंट्स जो हैं आपके एडिशन पॉलीमर्स के. अच्छा, इसके रिवर्स जब हम बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स की, when we talk about the condensation polymers, then what happens here? When we talk about the condensation polymers में जब दो मोनोमर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है, when two monomers they connect together, they will be giving us, it will undergo a reversible reaction, ठीक है. Forward reaction तो कहलाता है polymerization, right, and the reverse reaction will be known as condensation. और आपको याद है कि यहाँ पर हमें मिलेगा पॉलीमर, और हमेशा आपके पास सिलेबस में जो है, जो एग्जांपल्स हैं, देयर 5 एग्जांपल्स वी नीड टू स्टडी. तो हर एग्जांपल में वाटर एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है. तो बेसिकली मोनोमर्स on polymerization they're giving us polymer and they're giving you water, or polymers when they disintegrate, the reverse process we call it hydrolysis. What is hydrolysis? When do we call it hydrolysis? When something react with water, combined with water. So the reverse process, the forward is known as polymerization, right, the condensation polymerization, and the reverse is known as hydrolysis. So that means here what is happening in the hydrolysis, the polymer is actually breaking down, it's breaking down because it's a reverse process. ये break down हो रहा है और ये break down होके monomers दे रहा है. तो यहाँ पे ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हम कहते हैं कि जितने भी आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, क्योंकि दे आर ब्रेकिंग डाउन, सो दे आर बेसिकली बायोडिग्रेडेबल,
सही है, they are biodegradable. That means polymers will be breaking down into the monomers. ठीक है, तो they are not threat to the environment. So when we talk about the comparison, so you can write down this particular point there. Okay, so this was an introductory class over the polymerization. It's a small class I've taken. Now I'll be in the next class in session. Next part, I'll be explaining all the examples related to addition polymers and all the examples related to condensation polymers. Okay, and we will be doing the past paper questions as well. What am I up